So namaskar all of you. तो आज हमर गोटे इम्पोर्टेंट आउ स्पेशल सेशन रे आमे गोटे टॉपर स्टॉक रो गोटे सेशन करूछु हमर ए वर्ष ओडिशा जुडिशियल सर्विस 2023 रे रैंक 11 रखिथिबा आकांक्षा भट्टाचार्य कर संगे रे. तो बिफोर वी स्टार्ट आकांक्षा हमर टिल सक्सेस क्लासरूम स्टूडेंट आउ इनिशियली से कटक रे जॉइन करथिले तापरे ऑनलाइन क्लासेस हमरो करथिले. सो तांको संगे तांको जर्नी आउ तांकर स्ट्रेटजीज कोन थिला कोन बुक से फॉलो करथिले आउ जो माने प्रिपरेशन करचंती स्पेशली सेल्फ प्रिपरेशन करचंती केमिति कोन आपण प्लानिंग करके प्रिपेयर करिवे सो दैट फर्स्ट अटेम्प्ट रे आपण क्लियर कर परिवे काइना आकांक्षा भी सेटा फर्स्ट अटेम्प्ट रे तांकर एग्जाम रे क्लियर करके रैंक 11 पाइचंती. सो नमस्कार आकांक्षा, वेलकम. नमस्कार सर, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन. तो आपण को विषय रे किछि कोंतु फैमिली को विषय रे किछि कोंतु यू नो जो माने हमर ऑडियंस अछंती आपण विषय रे टिके बेसी जानिबे. यस सर, श्योर. मो कटक को बिलोंग करे. तापरे मोर स्कूलिंग देवी पब्लिक स्कूल सीधे कटक रु करछि. तापरे मोर टू प्रेफेस मोर छोट बड़ ही इच्छा थिला कि इट साउंड्स सो क्लीशे टू से बट मोर छोट बड़ इच्छा थिला कि मो जज हेबी बिकॉज मो ए कटक रा तो मो सब बड़े सत्यजरा पाखरे जजेस को कार जिबार देखे एंड फॉर सम रीजन मते बहुत इंट्रिगिंग लागे कि से माने आई सदर भी बसचंती दे वुड बी रीडिंग समथिंग दे वुड बी डूइंग समथिंग दे विल बी वर्किंग ऑलवेज. तो मते सेटा सब बड़े इंट्रिगिंग लागे एंड आई वाज स्मॉल, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. तथा मम्मा को मम्मा मुना बड़ हेले जज हेबी. इट वाज सॉर्ट ऑफ अ चाइल्ड गोटे ये थिला छोटा स्वप्न थिला बट जब मो बड़ हेली मो एक्चुअली बुझिली कि व्हाट पोजीशन दे एक्चुअली होल्ड इन द सोसाइटी और केते इंपोर्टेंट सेटा. सेति पे मो इवन दो मो 10th 9.6 सीजीपीए थिला व्हिच वाज अ वेरी गुड स्कोर, स्टिल आई चोज टू डू pursue arts because I knew by pursuing arts it will be helpful for my legal career. तो मु सळाबेला रे जॉइन कली आर्ट्स रे. तापरे सळाबेला रे मु आर्ट्स से टॉप करथिली 2017 रे सळाबेला टॉप करथिली मु. तापरे मु वर्षे क्लैट पे ड्रॉप नेली बिकॉज मु +2 सहित भी करि परथांती बट मु जनरली डुअल माइंडेड हुए ना. मु जोटा परस्यू करछि मु सेटा ऊपर पूरा फोकस दे. मोट लागे मु +2 पूरा भल से करबी. तापरे मु क्लैट पे वर्षे ड्रॉप करके प्रिपेयर करबी. मु वर्षे ड्रॉप करके प्रिपेयर कली. 2018 रे मोर डीएसएनएलयू विशाखापट्टनम रे हला. तो मु सेठी जेके जॉइन कली. 2023 रे मु पास आउट हेली 2023 मे रे. सेबेठु मु taking a drop मो OJS पे प्रिपेयर करछि. कमिंग बैक टू फैमिली बैकग्राउंड, मो फादर जने इंग्लिश टीचर से सरस्वती शिशु विद्या मंदिर तुलसीपुर रे इंग्लिश हाई स्कूल इंग्लिश टीचर. मो मदर होचंती नर्स एट एससीबी मेडिकल कॉलेज. तो से माने छोट बड़ो माने से माने जेहेतु सोसाइटी सहित एते इंटीग्रेटेड अछंती सोसाइटी रे काम करचंती. मोर सेटा छोट बड़ सेटा भी थिला कि मु भी सोसाइटी पे किछि करिया को चाहूची बिकॉज़ से माने मोर इंस्पिरेशन मु तांको परिका हपा को चाहे. मोर सब बड़े सेटा आई विल ऑलवेज वर्क टुवर्ड्स इट. तो सेति पई सेटा भी आ गोटे रीजन टू जॉइन लीगल प्रोफेशन. तापरे मोर जने बड़ भाई अछंती सी ओयूटी रे फॉरेस्ट्री करिके अबिका एनजीओ रे काम करचंती. सो फैमिली रे एमती सब अछंती. ओके, अच्छा आकांक्षा एटा अपन तो कहले चाइल्डहुड ड्रीम थिला बट पूरा माने एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन आउ बेसिक प्रिपरेशन एग्जाम पे जेतो अपन कहले अपन ओटे नेशनल यूनिवर्सिटी रे पढले तो सेठी केमती कोन आपनकर माने ओरिएंटेशन ता केबे टू स्टार्ट हैला टुवर्ड्स स्पेसिफिकली जुडिशियल सर्विस प्रिपरेशन अपन तो कहले इंटरेस्ट फर्स्ट हुई थिला. आउ एटा मोर फर्स्ट क्वेश्चन. आउ सेकंड क्वेश्चन मोर हैला कि लाइक आपण केते ड्यूरेशन पई ओजेएस स्पेसिफिक प्रिपरेशन करिचन केते वर्ष की केते मास आपण को ओपिनियन मिनिमम एंती केते आपण को टाइम दरकार ना. बहुत पिला सेटा पचारंती केते जन तो एंती भी कोंती सर मु 3 मंथ्स रे सर द पे चाहूची मु 6 मंथ्स रे सर द पे चाहूची. सो आइडियली स्पीकिंग जने जदी फर्स्ट अटेम्प्ट रे क्रैक करिया पे चाहूची ताको बेसिकली केते टाइम भीतर ताको कंप्लीट करिवार अछि. आज्ञा सर जेहेतु बैक ऑफ द माइंड मोर सब बेले ओजेएस थिला सेति पे जते बेले पढु थिली जते भी कोर्स हमको पढा होतला मु चेष्टा करथिली कि मु तार कांसेप्ट
even though more exact section number मन रहउनी law रो को provision मन रहउनी but I wanted to be conceptually sound तो मो टिके बेसी फोकस करथली कांसेप्ट पढुथली बुझुथली सेटा भी सेठी भी मो मार्क्स ओरिएंटेड नथली कि माने ए मार्क माने मते खाली ए क्वेश्चन पढेबो हम खाली एटा घोषित कि पढेबे आंसर लिख देबे सेटा नथला मो कांसेप्ट को एक्चुअली बुझाउ चाहथली एटा मते सेठिकार एग्जाम्स रे भी बहुत हेल्प करथे बिकॉज़ आई वाज स्कोरिंग इन द सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड रे मो रहउथली सब बेले कॉलेज रे बट मो एक्टिवली ओजेएस पे प्रिपेयर करनथली बिकॉज़ मो कॉलेज लाइफ टा को भी तार वेरियस फैसेट्स देखाउ चाहथली मो मूड कोर्ट कॉम्पिटिशंस करची मो वेरियस सेक्टर रे जीती जी भी मूड कोर्ट कॉम्पिटिशंस नेशनल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशंस मो वेरियस सेक्टर रे इंटर्नशिप्स भी करची स्टार्टिंग फ्रॉम कंज्यूमर फोरम to NGOs to district courts, high court, supreme court because our experience हम तो कहीं नहीं चिपेनी तो I always believe that कि हमारा horizon टा सब broad रहे दरकार इतने मैं dedicatedly OJS पे prepare करेनी in my university. However, I always had it in the back of my mind इतने पढ़ला time रे हमारा concepts को clear रखिया को चाहूँगी. तापर जते बेले वो पास आउट हे गेली कॉलेज रे 2023 रे 2023 रो डेडिकेटेडली पढ़िया स्टार्ट कली ओजेएस पाई फ्रॉम जून ऑफ 2023 मु मेरे फेरी के आसली मु मासकर हाइटेस्ट नेली आई स्पेंड टाइम विथ माय फैमिली देन जून रु मु डेडिकेटेडली पढ़िया आरंभ कली दो मु आरोहन रे 2023 जनवरी रे एनरोल करथिली बिकॉज़ ऑनलाइन क्लासेस रो सुविधा थिला मु टिके हेड स्टार्ट नबा को चाहतली सेति पई मु 2023 जनवरी रे जॉइन करथिली बट अगेन फाइनल सेमेस्टर ये रे सेटा पढेला मो प्रिपेयर कर परले नि कि बेसी कैच अप कर परले नि बट जून रु मु प्रिपेयर करिया स्टार्ट करली एंड वेरी गुड थिंग इज सब क्लासेस हमको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल थिला सो आई वाज I had a peace of mind कि मो बाहर क्लासेस अवेलेबल अछि मु चाहिले फेरी कि जाय कि से क्लासेस देखि परिबे सेटा थिला अब मु जून टू प्रिपेयर करे आरंभ करथिली 2023 रे 2022 रो एग्जाम हितला बिकॉज़ 1 ईयर बैक पे चलची एग्जाम्स सेतर मोर एज एलिजिबिलिटी हि नथला कि मोर सर्टिफिकेट भी नथला कॉलेज रो तो 2023 एग्जाम मु दे परलिनी 2023 रे 2024 रे 2023 नोटिफिकेशन बाहरला तो मु जून पर्यंत विदाउट एनी एग्जाम प्रेशर प्रिपेयर करची जून रे प्रीलिम्स हैला ता परठू विथ एग्जाम प्रेशर मेंस पे प्रिपेयर करली because prelims is जदी sections clarity अच्छी prelims is easier to crack because हमर भी cut off रो system नहीं हमर 40 minimum mark रो system अच्छी if we are thorough with the previous year questions and we know कि को area रो generally prelims question आस्ते practice थिले prelims is easier to go through however mains is different we have to have both conceptual clarity भी थिबा दरकार सब आंसर आस्ते दरकार आ ताको रिप्रेजेंट भी करि परथवा दरकार पेपर रे सेति पई 2024 जून रे पूरा फुल एग्जाम प्रेशर सहित मेंस पे प्रिपेयर करथिली तापरे आफ्टर इन नवंबर मेंस एग्जाम हेतला सेति पर्यंत फुल डेडिकेटेडली मु सेई 4-5 मंथ्स विथ फुल प्रेशर एंड सेई टाइम रे मु प्रिपेयर करछि ओके जोटा आपण कहले आपण के जॉइन करथिले टिल सक्सेस क्लासरूम बैच रे जॉइन करथिले आरोहन रे तापर जोटा कहले आपण तापरे जेतु फैसिलिटी टा अवेलेबल रहउची आपण मोस्ट क्लासेस आपण ऑनलाइन करछथि तो एटा भी एक्चुअली बहुत पिला जो माने लाइक दूर रे रहउचंती कि माइट नॉट बी पॉसिबल फॉर देम कि कटक भुवनेश्वर आसी क्लासेस करिवे आपण को पर्सनल एक्सपीरियंस रे यू नो हाउ वुड यू कंपेयर यू नो जनरली स्पीकिंग यू नो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भितर डिफरेंस ता स्पेशली कोविड परे हमर जेतु ऑनलाइन क्लासेस बहुत जन ताकू भी ये करछन खाली क्लासेस नो इवन कोर्स हैव गॉन ऑनलाइन आउ मोस्ट ऑफ द एमएनसीज ए वर्क फ्रॉम होम कांसेप्ट रे भी चली चंती तो एज ए स्टूडेंट मु जदी क्लासरूम रे न रही कि मो घर रो कंफर्ट आउ सिक्योरिटी रे मु मोर पढुची तो एथरे प्रोस कॉन्स कोन आपण पर्सनली जे तो आपण क्लासरूम रो भी किछ क्लासेस करछथि ऑनलाइन रो क्लासेस करछथि केमती आपण कंपेयर करिवे सेटा सर दीटार प्रोज आउ कॉन्स अछि बट मो पाई मते बेसी ऑनलाइन ता फेवरेबल लागिला बिकॉज़ मो क्लासरूम क्लास भी करछि आई वेंट एंड आई कुड नॉट फील एनी डिफरेंस मते एकाई लागला बिकॉज़ मु जेंति क्लासरूम रे क्लास करछि मते ऑनलाइन रे क्लास करला परिका भी सेमती लागिला मते इक्वली ये लागे दीटा जाको बट आल्सो डिपेंड्स कि कहार डेडिकेटेड स्टडी स्पेस अछि कि नाही से माने टिके फैमिली टू डिस्टेंस मेंटेन करिकी से गोटे निज पई गोटे सेफ एनवायरनमेंट गोटे सेक्लूडेड एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते ऑनलाइन क्लासेस करी परचंदी देन इट्स अ वेरी वेलकम थिंग बिकॉज़ ट्रैवल सहित क्लासरूम क्लास सहित टिके हमर ऐड भी जाउची कि ट्रैवल टाइम ऐड हो जाउची आउ
फटीग ऐड ही जाउची हम गोटे प्लान करिया पड़छ हम डे जदी हम क्लासरूम टाको प्रेफर करछ ऑनलाइन रे सेटा नाही कि फटीग ट्रैवल फटीग ऐड होनी जिपा आसीबा टेंशन ऐड होनी सेटा गोटे ऐड होनी तो आए मते सबडे ऑनलाइन टा ही भल लागे कॉन्स अगेन कि टिके माइंड डिस्ट्रैक्ट भी जाय बिकॉज़ बेले बेले सेटा वन साइडेड हेई पारे if we are not interacting in class तो मु भाबे कि तार की होची that we should interact because जे टीचर्स अछंती they also want students to interact कि से माने क्वेश्चन पचारंतु कि whatever question they are asking students answer it तो हम जदी attentive रहिबा online classes will be as equally better as classroom class मते जेमति लागे I personally could feel it but interaction is important it should not be a one sided conversation that the teacher is teaching and we are on the receiving end it should be a two way communication कि हमें भी contact रोजो teachers को सहित interact करूचु then it will feel like a holistic experience more so ओके अच्छा ताले एबे आसीबा आपनकर बिफोर यू नो द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट काना बाकी जिंस तो ठीक अछि हमें आपनको इंटरव्यू टा ओके तो आपण इंटरव्यू एक्सपीरियंस टा फर्स्ट रू कोन कोन क्वेश्चंस आपनको पचरा हला ओवरऑल एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू आपनकर कोन गोटे ओपिनियन हला कि इंटरव्यू भलो जाई छी ना एंती बते भलो जायनी आपण निजे सेल्फ एसेस कोन करथिले आज्ञा सर सर इंटरव्यू थिला ता पूर्वरु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थिला मया प्रेफेस करबे कि ओपीएससी रो स्टाफ्स आर वेरी सपोर्टिव वेरी हेल्पफुल अपन पाखे जति किछि फॉर्म नाही किछि नाही दे विल टेक अ प्रिंट आउट दे विल गिव इट टू यू दे विल गाइड यू थ्रू आउट द एंटायर प्रोसेस आपनकर बस प्रेशर कम करियार अछि से जगह रे तापरे हमको गोटे सबु कैंडिडेट्स मानको गोटे सेपरेट इंटरव्यू वेटिंग एरिया को निया हला where again the OPSC staff were like कि कहा को कौन जलखिया दरकार की कहा कौन चा दरकार की so they asked came and asked twice thrice that so it also felt welcoming and sort of relieving कि yes they are not against us they are for us तो सेटा गोटे feel हला तो it sort of calmed our nerves also and all the candidates were very sweet whoever were there they were very sweet it was a very positive environment and we sort of treated each other equally and all of us were wishing best of lucks to each other whenever we are going so I entered my interview my name was called my number was called then I entered the interview hall three panel consisted of three people one was OPSC chairman then another was a high court one of the high court justices and third person was the OPSC chairman we have to submit हम गोटे CIA form submit करिया पड़े जोथरे हमें हमरा educational qualifications working experience achievements और hobbies list करबो मोर hobbies रे थिला singing और cooking so as soon as I entered I wished them I sat down so sir asked ki your hobby is singing sing a song for us so I was taken back a little ki are they actually asking me to sing a song but also Sohag sir had prepared us anything can happen in an interview any question can be asked from anywhere whatever you have written from CIF even though I was taken aback I was not shocked it did not make me nervous because I was sort of prepared for it so I sang a para of the song and it was not like they just asked for the sake of asking they actually listened to the song and after that they complimented also कि आपण बहुत भलो गाइले आपनकर आपण कोन सिखि चंती कि गीत मु कहली नाइ सर मु सिखिनी माने एमति प्रोफेशनली सिखिनी मो बापा पाखर सिखिची so they all laughed and they're like no you should professionally train you have a very sweet voice so it felt sort of a reassuring my nerves were calmed even more that they made us feel really comfortable more experience रे तो बहुत comfortable feel करया को जते try करले तापरे से देखिले मोर schooling सब कटक रोची because we are not allowed to say our name or from where do we belong we are not allowed to say it so मोर schooling रो experience सब कटक रे थिला तो सेटा देखि कहले कि आपण तो टाउन रे रहिचंती पूरा टाइम हमें जहा देखुजु पढ़ा पढ़ी आपण सब टाउन रे आपण केमिति लेट्स से आपनकर 300 किलोमीटर दूर रे आपनकर पोस्टिंग हला गां रे पोस्टिंग हेची आपन सेठी केमति एडजस्ट करबे इलेक्ट्रिसिटी रो प्रॉब्लम थिबो के फ्रेंड्स न थिबे आपनकर सोशल लाइफ किछ न आपन केमति एडजस्ट करबे तो सर मु तांको कहली कि सर छोट बेलु हम बापा मां गां को हमको नेक जाइचंती बहुत थर तो आपन जो सिचुएशन मते लिस्ट डाउन करछन सेटा में we have faced it we have seen it we have lived through it so I don't think I'll have a problem so he laughed and said कि ताहले आपण चाहिबेनी कि से पाख आपण पाख जगह को पळे आसे को चाहिबेनी कि मु कहली नाइ सर आई वोंट डू दैट बिकॉज़ मते जोटी पोस्टिंग हबो मु सेठी करिबे
Then they saw other things in my CIF, and sir asked about that I worked as a research assistant at Odisha High Court. After mains, I joined it. So he asked me a few questions about it. कि आपनकर daily activities कौन था, आपनकर कामो कौन entail करे. So I answered that. And they asked me about live streaming. कि live streaming ऊपर आपनकर opinion कौन, तार pros और cons कौन. So I listed down कि it's a very good opportunity for general public to see. It would ensure transparency, etc. The faith on the judiciary would be reposed. And they asked me about cons. I said about social media ki social media re बहुत short clips viral होची जो out of context पढ़ होची तो सेटा गुटे cons, maybe some regulation may be framed around it. So he asked me that, say अभी lower courts रे भी live streaming start ହେଇଯିବ. Say you are a judicial magistrate, आपनकर तो बेसी लोकंक सहित contact रहिबो, आपण कोन do's and don'ts आपनकर कोन रहिबो कि आपण कोन करिवे कि live streaming रो dignity टा maintain हो, आपण कोन करिवे. तो मुझे कहली कि फर्स्ट मोर लैंग्वेज ऊपर मु कंट्रोल रखबी, लैंग्वेज को बहुत रेगुलेट करबी, किछि पर्सनल रिमार्क्स काहा ऊपर देबिनी, मोर इंटरेक्शन टाको एज प्रोफेशनल रखिबी मु. So these are the things that is coming on the top of my mind. Then they asked me about what do you mean by implicit bias. I said implicit bias is something a person has internally some favor or disfavors towards a particular subject or group of people that they have without any external influences. So they asked me, what bias do you have? So naturally I said, sir, I have not come across any scenario in my life where I would encounter any such bias. So sir laughed and said, "Ki, no, you can be honest with us. It's not like, say, what do you think could be your bias?" So I took a second to think and I said, probably, sir, I'll have a positive bias towards my own gender. So he said, Acha, you will be biased towards feminism. I said, sir, feminism is not a bias, it's a movement towards equality. So he said, yes, I get that, I understand it. So another sir asked that, see, you are in a family court, you're a family court judge, there's a husband, there's a wife, how will you decide? I said, sir, I'll decide on the facts and evidences. So he said, no, sir said just that you are, everybody has an implicit bias. You are biased towards your gender. So probably you will give a favorable direction towards the wife. I said, no, sir, to be human is to have bias, but it is the duty of us as in our profession that we have to set aside every bias as humanly as possible, and I will strive towards the same. He said, okay. Then I heard in achievements, I heard about my moot court competitions. So he asked me about advocacy and judiciary, that what are you most attracted towards? I said, sir, both of the professions has its own charm, but as my goal is to be a judicial officer, I am more biased towards it. Then he asked me about doctrine of motherly instinct. What does it entail in terms of custody of children? I said, sir, generally for a minor child, the custody of the minor is generally preferred by law to the mother as per Hindu Minority and Guardianship Act. However, the paramount consideration is always the welfare of the child. And with whoever the custody, the welfare of the child is ensured, the custody will be given to them. However, law gives a preference to the mother, but it's not a compulsion. He said, okay. Then another question was asked me regarding National Green Tribunal, that what is its composition, who are its members. I was not aware of the same, so I very humbly said, sorry, sir, I don't recollect the same. They're like, yeah, no problem. Then he asked me, there is a company that was going to be set up at Odisha, which could not be set up due to involvement of NGT and various protests happened. Are you aware of that company? I was not very sure of the company, but generally Vedanta comes on the news very much for this environmental concerns. So I very humbly said, sir, I am not absolutely sure, but my best guess would be Vedanta, but I am not sure. He said, no, it's not Vedanta, it's Pokso, a South Korean company. So I said, sorry, sir, I stand corrected. Maybe in retrospect, I think I should not have answered this question because I was not 100% sure about the answer. But one good thing about the panel is they never made me feel that I am answering incorrect. They very politely gave the answer to me. Answer na so it felt really reassuring that it felt less like a grilling session. It felt more like a discussion that they are also giving back the answers to me. Then another one question was posed to me regarding the amendments to rape laws.
what amendments did happen to rape laws? I said, sir, amendment to rape laws have happened in various phases. In 1980s after the Tukaram case, in 2013 after Nirbhaya gang rape case, then in 2019 also some amendments happened. So they asked me about Tukaram case and also asked me the name of the victim. Even though I knew the name of the victim, but same moment रे मोर recollect हेलानी ना. तो मु से तुकाराम केस विषय कह कि लास्ट को मु कहली कि सर I am unable to recollect the name of the victim currently. I'm so sorry. So sir said कि the name is Mathura. Her name is Mathura. I said yes sir, sorry sir, I could not recollect it. So he said no, it's not a problem. So he said that, and he asked that in 1986 what other amendment happened to Indian Evidence Act. So sir, in section 114A was added to Indian Evidence Act. So he asked me what is that section. I said it is regarding presumption of consent. He said okay. Then my last question was when was section 376D was added. And after the entire session, I could not recollect it. Even though I was sure that was gang rape, but I did not wanted to take a chance. I smiled and said, "Sorry, sir, I don't recollect currently." And then they're like, "Yeah, it is done. That's it. You may go." I said, "Thank you so much." I wished individually, "Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir." At the end, sir looked at me and gave a smile and nodded his head. And it sort of felt reassuring, as if maybe it went well. And after I came out, it was really reassuring for me that I could, irrespective of the result, I felt confident and it did not feel like a bad experience at all. It was a very good experience. And if I had to do it again, I would probably do it again, because it was a very good experience. So that was overall my interview experience. Okay. Basically ताले आपण जब तक माने डिवाइड करिवे कि पर्सनालिटी बेस्ड और बायोडाटा बेस्ड क्वेश्चंस और स्ट्रिक्टली लॉ क्वेश्चंस जोडा कि आपण का सिलेबस रु आसु जो ना सीआरपीसी आईपीसी ता ऊपर क्वेश्चंस आपण पचाउछन एही दीटा भितरे केमती माने सो लाइक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वेयर नॉट फ्रॉम द सो कॉल्ड सिलेबस कना इंटरव्यू रो तो किसी सिलेबस न थाए बट बहुत जण सेमती भाबंती तो आपण को बेसी पर्सनालिटी बेस्ड और सोशो लीगल एस्पेक्ट रो बेसी क्वेश्चंस पचराला ना जोडा कि स्ट्रिक्टली लॉ क्वेश्चंस जोडा ही पचराला. No, sir. I feel basically at this point, probably they are assessing the personality more. Yes, I forgot to add, they even asked me a question, how are you going to manage the stress of the job? It is a very stressful job. How do you feel that you will manage the stress of the job? I answered it by giving certain things. I answered it. So what I could understand is they were assessing more personality. It was half divided, but it was heavier on the side of personality, I felt. For me, my experience was that it was more of a personality test rather than a knowledge test, because internally I also feel that after prelims and mains, I sort of know that the person knows the subject or knows the law. Maybe we have to see that how well they can manage the job or how well they are suited for the job from their personality. So I could feel that personally. अच्छा ओके तो एबे आपनकर जेतो आपण फर्स्ट चांस रे एग्जाम क्लियर करले आपनकर केमती स्ट्रेटजी कोन थिला स्टडी स्ट्रेटजी आपण माने अलगा अलगा प्लान्स आपनको थिला प्रीलिम्स पे अलगा प्रिपेयर करथिले मेंस पे अलगा प्रिपेयर करथिले ना गोटे इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करथिले आ कोन आपण एडवाइस करिया पे चाहिबे जो माने एबे प्रिपरेशन स्टार्ट करूचंती जुडिशियल सर्विस पे कि को अप्रोच ता नेले ताको पई सेटा बेटर हबो. सर मु पर्सनली कौन करथि जते पन तो प्रीलिम्स नोटिफिकेशन बाहर नथिला वो इंटीग्रेटेड वे रे पढोथि मु सब्जेक्ट को पढोथि नॉट either from a mains perspective or from a prelims perspective. More I'll say from a mains perspective कि मते सब्जेक्ट ठीक से जानियार थिला मते कांसेप्ट्स ठीक से बुझियार थिला तो मु प्रीलिम्स नोटिफिकेशन बाहरला पर्यंत for 7-8 months मु खाली सब्जेक्ट पढ I attended classes, I made class notes मु सब्जेक्ट पढी के सेक्शंस गुडा बुझुथिली जते बेले प्रीलिम्स नोटिफिकेशन बाहरी गला and I had to 2 months थिला प्रीलिम्स पई मु सेतले last 10 years रो OJS रो प्रीलिम्स रो क्वेश्चंस कली. Then I went to question banks कि CPC रो 500 questions, CRPC रो 500 questions. Empty taking help of question banks, it really helped me get used to the process of elimination as well as getting to know what kind of questions are coming, not generally from OS, but from every other judicial services, because you never know ko varsa kemti question pade. So
that is what I did for prelims. Our direct prelims mein direct is the key. Knowing direct through and through कि को section रे कौन अच्छी, को subsection रे कौन अच्छी, को जगह रे को period लिखा है ची, कितने months लिखा है ची. So direct was the key for prelims and previous year questions and question banks. तापर prelims सारे गला परे. For mains, what I did was for every subject I prepared a topic list by going through last 10 years question. कि को subject रे को topics रे question आछे, not necessarily the questions but the topics. कि if I, for example, if I understand or I prepare on the concept of right of private defense, I know every aspect of it. तो सेतु जो भी question पढ़िबो, जो भी variation रे question पढ़िबो, मु सेटा को answer कर परिबे. तो मु गोटे टॉपिक लिस्ट बनेली सब सब्जेक्ट रो, मोर जो मेंस लिस्ट सब्जेक्ट थिला आ मु सेटा ही फॉलो करली मेंस पे. मु सेटा ही प्रिपेयर करची, सेतिकरू प्रिपेयर करची और थैंकफुली से टॉपिक्स भितर ही क्वेश्चन आसी गला मेंस से. एंड आई हैव आल्सो सीन दैट जे तो हमर ऑप्शनल सोची 6टा क्वेश्चन रू जो 3टा में एलिमिनेट करिवो, 12टा रू जो 6टा में एलिमिनेट करिवो, सेटा जो 6टा हमको आंसर करे पड़ो, सेटा नेसेसरीली प्रीवियस ईयर रू ही थिबो कि जो टॉपिक गुडा रिपीट होची सेटा रिपीट ही थिबो. एंड इफ वी आर श्योर ऑफ द बेसिक्स, काहे जे तुमरा फर्स्ट अटेम्प्ट थिला, मोर किसी टाइम भी नथिला कि मु सबु टाइप्स रो क्वेश्चन करि परिबी. त मोर गोल थिला कि जोटा मु जानि छि कि शॉर्ट शॉर्ट रिपीट होची, मु सेति के एटलीस्ट थरो थाय. ते ता बियॉन्ड पड़े गला आ मु किछि करि परिबी. आई डिड नॉट हैव द टाइम, बट मोर बेसिक्स टा मु क्लियर रखन थि, जोटा बार बार रिपीट होची. तो मु सेटा ही करि छि एथरा पाई. से टॉपिक लिस्ट आई फॉलो करछि, मु सेति की ही प्रिपेयर करछि. आ मेंस पाई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट. कि खाली पढ़ी देले हबनी, ताको केमति हमें एक्सप्रेस करबा, दैट इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट. कि केमति हम ताको रिप्रेजेंट करबा ऑन द पेपर, दैट इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट. द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट फॉर मेंस. ओके, आपनकर आंसर राइटिंग स्टाइल टा केमते थिला? फॉर एग्जांपल आउ टाइम मैनेजमेंट विषय रे कोन, तो स्पेशली इन प्रोसीजरल पेपर. तो आपण पूरा एग्जाम रो सब पेपर्स यू आर एबल टू कंप्लीट ना, किछि क्वेश्चंस आपण छाड़ थिले? Again, ना मु किछि छाड़नी. I was able to complete the full paper of every subject. Most coming to style of writing थिला कि not making it paragraph wise, making it pointers and giving headings, underlining. तो इतरे कौन हुए, you can catch the eye of the examiner to whatever you want. So तांको फोकस टा को शिफ्ट करिया को दियो ना, तमे जहा तमु देखिया को चाहछ सेटा को अंडरलाइन करते, से सेटा देखि पड़ेबे व्हेन दे नो कि आपण कोन लिखि जंदे. तापरे इंट्रोडक्शन रे write everything that you are going to write in the answer. Give them a brief overview. मु सेटा फॉलो करथिली कि brief overview. For example, again coming to right of private defense, for example अगर right of private defense your question करछि, so in introduction I wrote in this question I will mention the limits, the statutory provisions covering right of private defense and the case laws and the limitations of right of private defense, and where right of private defense can extend to causing death. So I gave a brief introduction, brief overview of the entire answer in the introduction, so that they know what to expect going further. Headings करके right of private defense of body, को section आसिला, कौनटा limitation, then right of private defense of property, कौन section को थोड़ा death cause करी होगा, case laws data कि both landmark case laws data, तापरे enter conclusion कि right of private defense, for example, is a very important defense in the Indian Penal Code or now Bharatiya Nyaya Samhita, because it protects the life and of the person, safety of the person. For example, the more generally answer structure se athila means time management procedural re mu tikke deviate karthili, because generally advisable कि जेतिकिटा मार्क रो क्वेश्चन सेतिकी मिनिट्स we should dedicate that time to that particular question. However, जब मैं start करूँ writing, first question तिक्के time अधिका नहीं जाए, and at first also you are trying to create an impression कि you build a credibility कि you are writing the answers properly. तो सेतिपाई maybe first दिटा question ने मुझे 30 minutes देथिली, end रे जब तुम्हारा हाथर speed बन जाइथिला, मोर माइंड लो क्लैरिटी आसेले कि मु ए आंसर करिया को जाउची, सेतिपाई तादरे टिके कम टाइम नै कि बा could complete the question. सेही कॉन्फिडेंस टा कोठ आछो तरा हम प्रीवियसली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिथिबो. यदि मैं प्रीवियसली ट्रायल एंड एरर बोथ आंसर राइटिंग दा
तो हमें गोटे टेक्निक ट्राई करिवो हमें देखिलु कि हमें कंप्लीट करि पारन से टाइम भितर तो अगेन वी विल स्विच ओवर टू अ नेक्स्ट टेक्निक तो जदि मैं पूर्वरु सेटा प्रैक्टिस करथिबो सेटा हमको हेल्प करिवो मेन रे एग्जाम रे आंसर लिखिबो मैं टू ईच देयर ओन बट जनरली टाइम टा बहुत इंपोर्टेंट बिकॉज हमको हमें बहुत गोटे टॉपिक बहुत भल से पढ़ी हमको लागबो कि हम सब लिखिबो या दरे बट मैक्सिमम तो हमको 25 मार्क्स ही मिलेबो ना मैं जत्ते भी लिखिले आउ बाकी रे हम किछ न लिखु सेठी मार्क्स मिलेबो तो वी विल लूज मार्क्स में टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपोर्टेंट और सेति पई पूर्वर प्रैक्टिस इज वेरी इंपोर्टेंट वी हैव प्रैक्टिस एंड वी नो कि हमको केते टाइम लागो आंसर करियो ओके ऑफ कोर्स आपनको राइटिंग स्टाइल तो सब हमर एस्पिरेंट्स जो माने ओजेएस दौचंती से माने आपण केमते आंसर लिखि देले दैट ऑलरेडी वी हैव गिवन इट ओपनली इन आवर टेलीग्राम चैनल तो से माने भी जान परिबे एथरु कि आपण जहा जहा कहिले केमती कोन एग्जैक्टली आकांक्षा लिखिथिले आपण माने भी टेलीग्राम चैनल रो डाउनलोड कर परिबे तांकर दुईटा कॉपीज हमें जोडा ये करछु अपलोड करछु अच्छा तापर एबे असला आपनकर जो यू नो डेली शेड्यूल माने सेटा गोटे जिंस लाइक डिफरेंट हमर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स डिफरेंट ये कोंती आपनकर माने लाइक केते आवर्स पढुथिले आउ जोटा केबे केबे आपनको किछि लाइक यू नो स्टडी फैटिक हे जाउथिबो कि किछि आपण टायर्ड हे जाउथिबे तो से टाइम रे केमती कोन आपण सेटा यू नो ये करथरे बहुत जण एंति थांती कि से माने फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम सोशलाइज करबा बंद कर दियंती तो आपण का अप्रोच कोन थिला तो सेटा गोटे दैट इज वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड तापरे हमें जिबा फर्स्ट यू कैन आंसर दैट देन वी विल गो टू द बुक लिस्ट काना बहुत पिला स्पेशली जो माने सेल्फ प्रिपरेशन करूचंती तो से माने जानिया पे चाहिए कि आपण को बुक्स फॉलो करथिले तो मु हमर जते स्टैट्यूट्स अछि हम सिलेबस रे गोटे गोटे कहबी आपण कहबे आपण कोनटा फॉलो करथिले आज्ञा सर मेंस पूर्व प्रीलिम्स पर्यंत जनरली मु 6-7 आवर्स डेली पढुथुली ता बियॉन्ड मु पढी पर नथुली मोर जति कि आई थिंक इंटरनल मोटिवेशन आसनतला पढिया को कि प्रेशराइज होनतला तो ताटू मु इवन दो आई वांटेड टू स्टडी मु ता बियॉन्ड पढी पर नथुली आई वाज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय समथिंग और द अदर बट आफ्टर प्रीलिम्स फॉर मेंस it is not sustainable at all. I will not recommend it to anybody, but I was studying for around 16-17 hours daily कि मु राति रे 11 रे बसी की पढुथली मु स्टार्ट करथली पढिबा I would study till 6-7 in the morning, then I'll sleep till 10, then 10 रे I'll wake up, I'll have my breakfast, do my work, मतलब daily chores जहा मु 12 रे बसी की पढिबा को 12 रु 3टा मु बसी की पढिबी then 3टा रे मु लंच करिबी लंच करी के टिके आफ्टरनून नैप मे बी 1 hour half an hour मे बी तपर 5टा रो बसी की पढिबी अगेन राति 9-10टा बंद डिनर कला पर्यंत सो सेटा मु 3-4 मास करिछि but because the mu ta purbu mains mein because basic focus par mantla and I could understand the syllabus was very huge so sei pressure re mora he gala but it's not sustainable at all I'll say don't do it ta purbu time apna bhal se manage karantu apna jemti mu purbu 5 घंटा पढली से टाइम रे मे भी apna 10 घंटा adjust करिया को चेष्टा करंतु but don't do it the way I did it it's not healthy at all but हे गला व्हाट मतलब बाय गॉड्स ग्रेस में भी हे गला सो मोर टाइमिंग सेरा थिला आउ मु जनरली सोशल मीडिया रो ब्रेक नेनी कि सोशल लाइफ रो ब्रेक नेनी बिकॉज़ I could not do it मु बस की करि पर न थांती मते गोटे आउटलेट दरकार I needed to talk to my friends because मो फ्रेंड्स माने मो फैमिली मते बहुत सपोर्ट करचंदी ए वे because in this process it's such an isolating process where you prepare that you need your friends family support to have a conversation with them and everything जतले मते लागुतला कि I cannot study anymore मो मदर वर्किंग ता म जनरली घरे टिका अधिका काम थाए रिस्पांसिबिलिटी के थाए बट से टाइम रे मो मदर मते पूरा nothing I was not put on any responsibility anything even though it was so difficult for her बट से सबु निजे करूथिले तो से टाइम रे जाके मुटियो मामा करे हेल्प कर दे कि रोटी कर देली कि तरकारी कर देली कि जहा कर देली तो मते भी खुशी लागे कि at least I am able to contribute something to the family or do something to the family and more a best friend एमती 15 days थरे जाके तांको देखा करबा कि कोन करबा बिकॉज़ माइंड ता आपनकर मेंटली आपन
क्लियर हबा दरकार मेंटली आपण फ्री हबा दरकार टू स्टडी नहले हपनी पाठ हे परिबनी यू विल फील वेरी फटिग मेंटली बहुत फटिग तो सोशल लाइफ ता मो हिसाब रे आपण मेंटेन आइसोलेट हे जिबा कथा नहे बिकॉज़ आइसोलेशन रे आपण सेल्फ डाउट्स बढ़िबो कि आपण सब बेले क्वेश्चन करिए कि मु ठीक से प्रिपेयर करछि न करछि मु हार्ड वर्क करछि न करछि यू नीड आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव टू मेक यू अवेयर कि नाही आपणकर एआई स्ट्रांग सूट्स अछि आपण एक्चुअली हार्ड वर्क करूचंती और यू आर अ डिजर्विंग पर्सन सेटा दरकार सोशल लाइफ टिके मेंटेन करा दरकार आई फील Okay. अच्छा then now let us come to the book list. ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମର ଯାହା ଅଛି ଇଏରେ ଆପଣ କଣ ତା ପାଇଁ ଫଲୋ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଇଏ କଣ ଥିଲା ଅପସନାଲ୍ସ କଣ ଆପଣ ଚୁଜ କରିଥିଲେ सर मोर लॉ ऑफ क्राइम्स एंड थॉट्स थिला तापरे प्रॉपर्टी लॉ थिला आउ पर्सनल लॉ थिला ओके फाइन तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीलिम्स ପାଇଁ କେମିତି କଣ ପ୍ରିପରେସନ को बुक रू बैरेट आउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस so you did not follow any specific book No. for the constitution No. of India for prelim अच्छा तापरे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कौन कोटा कोड फॉलो करते आज्ञा सर प्रथमे तो सीपीसी पे बैरेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रेफेस फर्स्ट बैरेक्ट देन देयर इज अ पब्लिकेशन देयर इज अ ऑथर अशोक कुमार जैन तांको फेमसली दुक्की सीरीज को हजा तांको बुक्स को तो एके जैन को बुक सीपीसी पे ओके तापरे सीआरपीसी पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अगेन बैरेक्ट एंड दुक्की एविडेंस बैरेक्ट एंड दुक्की ओके जो ट्रेडिशनल बुक्स अपन जोटा में लाइक टेक्स्ट बुक कहूती जोटा अपन लॉ स्कूल रे पढ़थिबे सेगुडा अपन एते ताको रेफर करि नांदी सर एक्चुअली सेटा मोर क्लासेस रे बहुत कवर हे गला कि बेसिक कांसेप्ट्स पे हमें बुक्स फॉलो करो बट क्लासेस वर सो कॉम्प्रिहेंसिव कि मते से बुक्स को ट्रेडिशनल बुक्स को जिबा पड़ले ना मु यूनिवर्सिटी रे भी पढ़ी छी से बुक्स बिकॉज़ मोर कांसेप्ट टा को यूनिवर्सिटी रो क्लियर रखे चेष्टा करछि तो सेट टाइप रे हमर कोर्स बुक्स गुडा थिला आई हैव ऑलरेडी स्टडीड इट तो मु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे दुक्की फॉलो करछि सब बुक्स ए सब एग्जाम्स पे ओके तो एविडेंस पे भी से आज्ञा सर आउ आईपीसी से अगेन से डायरेक्ट लिमिटेशन लिमिटेशन भी से अच्छा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ना सर लिमिटेशन ऑफ एसआरए क्लासरूम स्टडीज आउ डायरेक्ट बिकॉज़ सेटा बहुत छोटो एक्ट डेटा जाको तार बेसिक कांसेप्ट्स नाही इफ द क्लासेस आर गुड द टीचर इज एबल टू कवर ऑल द कांसेप्ट्स तबे बुक्स दरकार नाही आई डिड नॉट फॉलो बुक मु क्लासेस आउ डायरेक्ट ही करछि सी क्लास रे मु जो नोट्स बनेथि दैट वाज इनफ फॉर मी फॉर लिमिटेशन एंड एसआरए आउ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डायरेक्ट एंड आरके सिंह नॉट द की बिकॉज़ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रे बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दरकार तितमे आपन टिके एक्सप्लेन्ड दरकार कि एग्जांपल से तो बुझा आइथिबो आउ टिके माने केस लॉ गुडा टिके एक्सप्लेन करके बुझोतबे मते से लागे मैं आरके सिंह ता टिके बेसी डिटेल रे देछि टीपीए पई आरके सिंह मते बहुत हेल्प ओके अपन पर्सनल लॉ लेथिले तो हिंदू लॉ पई कोन पारस दीवान ओके एंड मोहम्मदन लॉ पई अकील अहमद ओके अच्छा तापरे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से आपण किछि माने जस्ट खाली बेयर एक्ट करथिले न ता पई डायरेक्ट आउ क्वेश्चन बैंक्स कि बिकॉज़ इट बहुत रिसेंटली ऐड हेछि ना डीवी एक्ट प्रीलिम से 2 वर्ष हेलानी ततपे तारो ओजेएस रे बेसिक क्वेश्चन नाही टू गो बैक एंड रेफर ता पे गोटे क्वेश्चन बैंक की ऑनलाइन रे भी एमसीक्यूज फ्रॉम डीवी करी कि 100 200 एमती क्वेश्चन आ जिवो डीवी एक्ट रे सब कवर हे जिवो ताते ओके आउ प्रीलिम्स रे जो अछि हमर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ता पई कोन आपण फॉलो करथि डायरेक्ट खाली डायरेक्ट अच्छा ओके नाउ कमिंग टू द यू नो स्पेसिफिक पेपर ऑफ इंग्लिश ओके तो सेथरे ऑफ कोर्स आपण तो टीएवी स्कूल रु कहले 10th ये करछन तो आपण इंग्लिश मीडियम रु पास करछंती बट स्टिल देन इंग्लिश पेपर रे हमें देखु छु बहुत पिला से माने मिनिमम स्टिपुलेटेड मार्क्स रखि पर नहंती तो इंग्लिश पई कोन स्ट्रेटजी रखिबा कथा जनरली आपण ओपिनियन हिसाब रे ओडिया ट्रांसलेशन तो आपनकर हाउ वाज योर ओडिया ट्रांसलेशन और रिट्रांसलेशन पई जदि किछि टिप्स आपण पिला मन को देबे
सर एक्चुअली हमें जनरली इंग्लिश पेपर टाटू को बेसी फोकस करू ना बट इट्स वेरी इंपोर्टेंट बिकॉज ओडिया टा मो प्रोफेशन पे बहुत इंपोर्टेंट सेटा हमें रियलाइज करना बिकॉज लोअर कोर्ट रे मोस्टली सब पेपर्स थाए ओडिया रे तमर ओडिया नॉलेज टा थिबा दरकार सेतपई ओडिया न्यूज़पेपर इज द रेफरेंस पॉइंट स्टार्टिंग रे आपण जनरली डेली लाइफ रे सेटा एज अ हैबिट इंक्लूड कर देले सो विथ टाइम सेटा डेवलप ही जाय वोकैबुलरी तार तापरे डेडिकेटेड ट्रांसलेशन बुक अछि जोटा आपण ट्रांसलेशन फॉलो करले वर्ड्स सहित हे जिवो प्रेसिटा इज वेरी इंपोर्टेंट बिकॉज सेटा को आपण को समराइज कर लिखा पड़िबो सेटा भी प्रैक्टिस संगरे ये हुए एसे इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ काहे किछिटा ट्रेडिशनल टॉपिक्स रु पड़े आसे और किछिटा जो सोशियो करंट अफेयर्स चलछि ता ऊपर आसे सेतपई जीके रे टिके अपडेटेड पॉलिटिकल सोशियो कंट्री रे इंटरनेशनली कोन चलछि सेटारे अपडेटेड रहिले सेटा एसे रे बहुत वैल्यू पॉइंट ऐड करे कि आपण धर वुमेन ऊपर पढिछि तर रिसेंट जो अमेंडमेंट्स हला कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग रिजर्वेशन ऑफ वुमेन सेटा लिख देले कि वुमेन इन पोजीशन किए किए सब थिले सेटा लिख देले एटा बहुत ऑर्नामेंटलाइज करिया को हेल्प करे एसे को मतलब ऑलरेडी वर्ड लिमिट कम अछि सेतपई जदि हमें ए सब फैक्ट्स ऐड कर देले सेटा मार्क्स पई बहुत हेल्प करे सेटा विथ प्रैक्टिस पड़े आसबो कि देखिबा आपण डेली गोटे एसे लिखि दोचंती कोडे टॉपिक ऊपर गोटे दिन थोड़ा ट्रेडिशनल टॉपिक गोटे नेले गोटे दिन आपण न्यूज रे देखिचंती एटा चलची मु यारी ऊपर गोटे निज भाषा रे गोटे एसे लिखि देबी तो सेटा बहुत हेल्प करे नहले जो मिलुची बुक्स मिलुची जोथरे स्टॉक एसेज अछि वेयर दे हैव प्रिपेयर्ड लाइक रिटन डाउन एसेज इते माने निजे ही ऐसे प्रिपेयर कर दिजन सेटा हेल्प कले आपण गोटे रेफरेंस पॉइंट मिल जिवो कि ए एसे रे मे बी ए पॉइंट्स ऐड हबो तो नेवर राइट दैट मो हिसाब रे केबे सेही एसेटा को लिखिबेन सेटा सेटर आपण इंस्पिरेशन नै कि निज वर्ड्स ऐड करके लिखिले जे एग्जामिनर तांको आपण को ओरिजिनलिटी टा फील हबो कि आपण एटा घोषि दे के लिखि नांती आपण निज थॉट ऐड करके लिखचन तो सेटा इंग्लिश पेपर रे आई थिंक दैट वुड बी हेल्पफुल Okay, so we are coming to the last part of this discussion. So ultimately बहुत पिला अछंती जो माने कि लाइक सेल्फ प्रिपरेशन करिया पे चाहउचंती either by choice किंबा forced by circumstances and all. तो सपोज मते एबे प्रिपरेशन करिवार अछि कोनोसी मते कोचिंग किछि नबर नै तो सेल्फ प्रिपरेशन रे केमति मु लेट्स से मु तो एमती फ्रेज करते कि मु फर्स्ट अटेम्प्ट रे ही जेमती क्रैक करि जिवि सेल्फ प्रिपरेशन रे तो व्हाट को रिसोर्सेस ओपनली एक्सेसिबल रिसोर्सेस जोड़ा आपण फॉलो करथिले आ जोड़ा कि बुक लिस्ट तो आपण कहले ता छडा सेही सब रिसोर्सेस जोड़ा कि पिला मानको को हेल्प करिवो ऑनलाइन हो कि किछि इंपोर्टेंट वेबसाइट्स हो लॉ प्लेटफॉर्म्स हो जोड़ा आपण फॉलो करथो जोड़ा आपण रेकमेंड करिवे आज्ञा सर यूट्यूब तो अबिका माने रिपोजिटरी ऑफ एवरीथिंग यूट्यूब रे आपण फॉर एग्जांपल मु जो टॉपिक लिस्ट कहली आपण पर सब्जेक्ट टॉपिक लिस्ट तयारी करछन गोटे टॉपिक रे अछि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्युमुलेशन फॉर एग्जांपल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपण यूट्यूब रे टाइप करले डॉक्ट्रिन ऑफ एक्युमुलेशन वीडियोस आपण को रेकमेंड हैला जुडिशियरी गोल्ड टॉप रैंकर्स अन एकेडमी तांकर सब टॉपिक वाइज इवन प्राइवेट जो माने प्राइवेट इंडिविजुअल्स माने भी बने की वीडियोस शेयर करछंदी तो आपण जनरली देखि परिबा कहार टिके व्यूज अधिक अछि पूरा टिके बेसी टाइम अछि कि आपन को जानिबे कि माने डिटेल्ड व्यू दोचंदी तो से टॉपिक रे आपण YouTube रे गले देखिले निजर टिके यूज करी कि कोडा मते फेवरेबल बेसी हबो से वीडियो देखि के आपण को कांसेप्ट क्लियर हे गला मो हिसाब रे आउ तापरे YouTube माने गूगल रे भी पीडीएफ्स अवेलेबल रोहुची बहुत बहुत कॉलेजेस अछंती जो माने ओपनली ओपन मटेरियल से माने रिलीज करथि डीयू रो भी पूरा रिपोजिटरी अछि सब सब्जेक्ट रो दिल्ली यूनिवर्सिटी रो नोट्स हिसाब रे तो सेगुडा रिलायबल सोर्सेस जोटा आपनकर नोट्स पई और वीडियोस पई YouTube और गूगल रो यूज हे पारे दैट इज वेरी हेल्पफुल आउ जदि आपण सेल्फ प्रिपेयर करचंती आप यू फाइंड अ फ्रेंड हु इज आल्सो प्रिपेयरिंग तो आपण कोलैबोरेट करे कि हैव अ टैग ऑन ईच अदर कि आपण हेल्प आउट करचंती निज को ये करचंती सपोर्ट दोचंती सेटा बहुत इंपोर्टेंट कि कोचिंग वाले सेटा गोटा आपण को ऑटोमेटिकली मिली जाय यू गेट अ कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल हु आर आल्सो डूइंग द सेम सो यू कैन फॉल बैक अपॉन देम बट आइसोलेशन द सेल्फ प्रिपरेशन संगे आसे
जोटा कि लॉन्ग टर्म रे टिके प्रॉब्लम मेंटली टिके ये ही जाए ସେଥିପାଇଁ find a friend who is also preparing and communicate with them. That is what I will say. Okay. So finally ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ତ once you join ଆପଣଙ୍କର future plans କଣ ଅଛି in the sense that ଆପଣ ଆହୁରି higher education କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି masters PhD and all and you know like ଯୋଉ question ଟା ଆମେ ପଛରୁ mock interview ରେ where do you see yourself after 10 years or 20 years, not according to the position in the judiciary hierarchy but you know as an individual. Okay, especially knowledge acquisition ये को नहीं की सर ऑफ कोर्स मु जेतु पूरा ड्रॉप नहीं मु मास्टर्स जॉइन करि नथिली ସେଥିପାଇଁ ମୋର या गोल रहइबो कि इन सब वेज आई कंप्लीट माय मास्टर्स बिकॉज I value knowledge and education तो मत दरकार कि I do my masters, I also do my PhD. Thank God we have a streamlined process where in service we can do both. We can do masters, we can pursue higher education. So our service also endorses the same. I'm very thankful for that. So after 10 years, I'll be 35 years. So I'll be eligible to give district judge higher judiciary exam. So I'll give the exam and I'll strive to go to the next level. And my goal would be to ମୁଁ ମୋର जॉब रो इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखि पारे टू द हाईएस्ट ऑफ द डिग्री एंड जो गोल रे मु जॉइन करछि टू सर्व द सोसाइटी एंड डिलीवर जस्टिस आई एम एबल टू डू दैट विल बी माय मोस्ट इंपोर्टेंट गोल फ्रॉम द सर्विस. Okay, so thank you and wish you all the best. May Lord Jagannath bless you you know with a very healthy, happy and prosperous life. Thank you. Namaskar. Thank you so much, sir, and I thank you at the end for your constant guidance and constant support throughout the journey. You have been a rock throughout it, and like answering every and any question, be it regarding service or preparation, be it about documents during document verification. You have been through the entire process, and I felt really supported, and I'll be forever grateful for it. Thank you so much, sir. Thank you. And Thank to you. ma'am Namaskar. as well. Namaste.